So, in the case of the diversity in the living organisms, what we can see is and the asexual reproduction. Okay, the basically the binary fission or the multiple fission or the budding will takes place either through vegetative propagation, tissue culture, fragmentations, spore formation, etc., etc. Okay, in which only single parent is required, and that is the case of the asexual reproduction. Well, in the case of the sexual reproduction, basically the male parent as well as the female parent both are required to form a new cell, which is also known as the zygote. Okay, and then the zygote will turn into the newborn baby, newborn, and then after some period of time, okay, depending upon the creature, depending upon the characteristic, the new like the new life or the newborn will come into the picture. Okay, now the when male gamete fuse with the female gamete, okay, they form the zygote, and this process is known as the fertilization. तो जो वन मार्कर क्वेश्चन है यहाँ जो वन वन मार्क के आपको चीजें दिए जाएंगी ना है ना उसमें दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Okay, fine, yeah. So this is like one of the part that you can see. Now, in that case also, the fertilization is basically of two types. Okay, that is known as external fertilization and internal fertilization. In the case of the external fertilization, like the zygote, the egg is developed outside the body, while in the case of the internal fertilization, the egg is developed inside the body. So that is this two type of fertilization. Other than that, we have the sexual reproduction in various types, okay, in plants also, in animals also, etc., etc. Okay, so here first of all we are talking about the flowering plants, that how actually the sexual reproduction will takes place in the flowering plants. So while in the case of the flowering plants we can say that, okay, the in the case of the flowering plants, the sexual reproduction will takes place through pollination. So pollination is a process when the pollen grains are transferred from anther to stigma of the carpel, and this type of like pollination is known as what? This type of pollination is known as what? Which is known as the self pollination or the cross pollination. Okay, 1 minute. क्या वो भाई दिए ना देखो चीजें अच्छी नहीं लगी आपको? हाँ कौन सी वाली? वेजियो वाली ही बनाई है बस चीज डाला है इसमें. अरे, हाँ आई रे. अच्छी चीज खाना है Okay. आप. Do you have any prior idea for the sexual reproduction in the flowering plants, that how actually the buds will develop and uh, like how actually the portion is are getting developed? Or you have Sir, learned I from uh, any other school as well? I just know the definition of like what is pollination or what is the difference between cross pollination and self pollination and like how do plants reproduce actually. That's it, sir. I don't know the process in detail, but Mm-hmm. I know the outer face of it. That's it. All right. Okay. So I think self pollination और क्रॉस pollination, when जब बेसिकली एंथर का या जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होता उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या सॉरी, जब उनका ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, ओके, तो ये चीज बेसिकली पॉलिनेशन कहलाती है ना. अभी in the fertilization process, न्यूक्लियस इज फॉर्म बेसिकली.
ओके। और ये जो न्यूक्लियस है, ये ओवरी के अंदर डेवलप होता है ना? एंड इनटू दिस ओवरी, देन the fruit will develop and it will start ovules and it will become a seed, और फिर यहाँ से seed का formation start हो जाता है. Okay, this will start forming the seed, and this thing will start taking place, and through this then we will see the lot of flowering plants are getting matured in different type of seasons. Sir, are you sharing your screen or what? No, no, I'm not sharing my screen. Okay, I sir. just opened the document. um, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला जो एक मैंने आई थिंक आपको 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट दिया था, है ना? Yes, sir. वो Of the NCERT. बायोलॉजी में, हाँ या यस, वो इसका क्या है ना, वो इसका शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है? आप पूरी बुक पढ़ोगे या फिर वो वाला डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, बात एक ही है ना? सो ये वाला जो पोर्शन है, ओके, you'll have to go and then you'll have to check out for these things one by one. Okay, so that is the one thing that you can see up as of now over here. Now come to the reproduction in the human beings. Okay, plants के केस में reproduction जो होता है, that is through uh, I mean pollen grains. Okay, the fruit will generate in the ovary and then the seed will develop. It is like this. But in the case of uh, in the human beings, okay, the process is a bit different. And in this case, in this case, uh, like the young born, okay, which is getting developed, that is also takes place into two categories. Okay, the one which is in the form of the egg and the one in the form of the young ones. So these are the two things that we can see as of now over here. Now, mm, give me 2 minutes now. Uh, Okay. I'll get the
खत्म कर दो यार। नहीं नहीं खाओ आप। नहीं नहीं, किसी का मैसेज आया क्या? शुभम, नहीं ना खाया था। नहीं 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 नहीं, चीज खाना पड़ता है। अरे थोड़ा सा यार अच्छी वैसी वाली एकदम मतलब यूँ करके मैं खाता हूँ वैसी वाला नहीं, थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा है। तो की चीज है ना इसमें। हट। चलो खाओ। नहीं नहीं, हॉल में आ जाओ, हॉल में आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, चल रही भैया, एक और खाली है कि ये स्वेटर निकालता हूँ कभी। अरे खा यार। अरे भैया चाय एक और खाली है थोड़ा। बहुत पुराना स्वेटर है। कुछ नया नहीं है तेरे पास? आराम से कहाँ कहाँ पे जाना है? कैंप जाएगा तू? पेट्रोल डलवा दिया था गाड़ी में हमारी। कल ही डलवाया था मैंने, तो अभी तो चली जाएगी, फिर तू डलवा। चलो बाबा आए। आराम से जाना, पहले बैठ के ना। सही गर्मी लग रही है। अरे भैया रास्ते में ठंडी लगेगी, उसमें सन जाएगा। सुन, स्कार्फ को रुमाल लगाओ, हेलमेट पहन लेना, नहीं तो पूरा दूर से सन जाएगा। आराम से एकदम, पूरा एकदम गोरा गोरा कपड़ा हो। क्या क्या मैं इसको क्या अरे वो भी कराड़ी के पास ही रेलवे स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर है। हड़पसर के भी आगे है कराड़ी। हड़पसर और तो आप किसका मिड पॉइंट बोल रहे हो? हड़पसर और मिड पॉइंट बोल रहे हो?
चड्डू, हाँ भाई यू। Okay. Yeah, Shrikriti. Yeah, sorry for the delay. Yeah, yes. So now we are going for the reproduction in the human beings. Okay. So in the case of the human beings, okay, the sex organs are basically for the male as testes and for ova that is basically for the females. Okay, so basically when fusion of the male organ and the female organs, okay, will takes place, and this will give rise to the young ones. So the male reproductive organ consists of the pair of the testes, then we have the epidermis, then we have the y differences, then we have the pair of the ejaculatory duct, then we have urethra, then accessory glands. These are like some of the pairs. Okay. अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी. Okay. When you will learn these things, then only you will get the differences over here. Otherwise it is not possible for you like to uh, see anything over here. Okay. बिकॉज अगर आप लर्न करते हो सारी चीज़ों को, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लर्निंग पे बेस्ड होती हैं. लॉजिकल जो होता है चीज़ें वो कम होती हैं. लॉजिक जो होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री तक बस वैलिड होता है. बायोलॉजी में ऐसा होता है कि बस जो चीज़ें लिखी हैं उनको बस एक बार डायग्रामेटिकली देख लो या उनको अपने माइंड में उतार लो और जैसा है एज इट इज़ वैसा लिख के आ जाओ. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती है तो वो होती हैं, इसका कोई अब लॉजिक नहीं है, ये मेडिकली प्रूवन है. ह्यूमन बॉडी में ब्लड का कलर रेड होता है तो वो होता है, ये मेडिकली प्रूवन है ना. अब इसको क्या करना है, आपको बस लर्न करना है, मगअप करना है और लिख कर आना है. यू गेटिंग इट. तो उसी तरीके से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दी हुई हैं, है ना. तो यू विल हैव टू जस्ट गो फॉर इट वन बाय वन. यू हैव टू मेमोराइज इट, देन यू हैव टू राइट इट डाउन. इसलिए बायोलॉजी का जब मैं टेस्ट लूँगा तो इट इज़ मोर और लेस लाइक अ स्टोरी राइटिंग. ठीक है, जितने अच्छे से आप, जैसे स्टोरी कैसे लर्न होती है हमको बचपन में हम स्टोरी पढ़ते थे, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, लाइक दैट. तो उसी तरीके से बायोलॉजी भी उसी तरीके से पढ़ो. ठीक है. और ऐसा समझो कि जो बायोलॉजी का आपका आंसर राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, या किसी भी चैप्टर का, मे बी इट इज़ फॉर मैथ्स, मे बी इट इज़ फॉर साइंस, वो ऐसा होना चाहिए कि when you are reading the things, okay, so it will automatically I mean you will automatically what, you will automatically get like digest. ठीक है. So you do not require more and more revision on the same thing, so it should be like that. You're getting the points what I'm saying? Yes, sir. All right. Okay. Now I'll tell you some more parts over here. Okay. Yeah, yes. Now, the female reproductive part, okay, we have the ovaries, we have the fallopian tube, we have the uterus, we have the external genitalia, we have a mammary glands, and also we have the accessory glands over here. Okay, we have the pair of ovaries in the female gametes, which is having the eggs or the ova, and then we have the female sex organs, which is basically the estrogens over here. Now, in the production of the sperms, when the fertilization of the ovum takes place, the upper end of the fallopian tube, okay, the germination takes place. Now, after that, the bleeding accompanied or the discharge is taking place, and the soft tissue lining of the reproductive tract, and what we can say, the menstrual flow, it will last, that is somewhere around 3 to 5 days.
But in the second, this is just a primary phase. But in the secondary phase, this phase will last for somewhere around approximately 15 days over here. So the question कैसे आता है अब इसमें एग्जाम में, that I will tell you. Okay, it is also basis on the time period. It is also on the basis of the diagrammatic labeling. Okay, if you know the diagrammatic labeling over here, okay, मैंने जो आपको document दिया हुआ है ना, in that the diagram is also present for flowering plants also, and for male reproductive organ also, and for the female reproductive organs also. Okay, other than that, the budding in the hydra, vegetative propagation, these type of things will also be there, and for that there will be the separate diagrams over there. Okay, so just look for the diagrams in any of the examination. It is not it can be seen कि कभी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हों which is कि make the diagram. Okay, but other than that, what they are asking is, I'll tell you that part. Other than that, the portion which they are having, that is nothing but like what कि diagram आता है, पर आपको बेसिकली उनमें सिर्फ लेबलिंग करनी होती है। लेबलिंग पे बेस्ड फिर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो ये जो एक कैटेगरी है, दिस इज द जनरल कैटेगरी फॉर व्हाट वी हैव सो फार। गेटिंग इट? Yes, sir. Okay, so this is the one thing that we can see so far as of now. Now, other than that, what are the other portions that we can have is, yeah, hmm. Now the fertilization process in the fallopian tube will take place, and the process of the zygote and in this process the zygote is formed. Now, other than that, in this process, the umbilical cord is produced, which is attached to the fetus, and during this, the process of two hormones, which is produced during estrogens and progesterone, will take place. Here, in the case, the the progesterone stops the menstruation and prevents ovulation. Okay, so basically during the pregnancy, the female body will not getting menstruation cycle, and during this, the uterine muscles for the young one is expelled, and this phenomena is called patriation. So all the terminology which you can see over here, okay, just learn all the things one by one. Okay, that what is zygote, what is internal fertilization, what is external fertilization, what is patrician, etc., etc. Okay. Now, if the egg is not fertilized, it lives for about 1 day, and since the ovary release one egg for every month, the uterus also prepare for self for every month and receive the fertilization of the egg. But after the age of 45 or after the age of 50 years, the menus stops, and this process is called the menopause. The menopause is that stage where the female are not getting any more fertilized egg, and then the chances of pregnancy also will reduce drastically. Now, the fertility control can also be done through chemically and through physical and through mechanical and through surgical method, but that we can learn in some other sections also. Although I have given you the material from top to bottom in which all the protective measures and like everything is mentioned over there, but yeah, yes, first of all we will go for the plants as well as the animals reproductive organs, and then we will go for the surgical method for fertility control and the other parts over there. Are you getting my point? I mean, up till Yes, here sir. this is just a short description, okay, for this chapter. Other than that, now there are some health barrier methods, okay, for the reproduction. What is that health barrier method? That I will tell you here. In this case, the mechanical barrier method is basically, this method is to prevent the contraception by preventing the entering of the sperms to form the uterus, or by preventing the implementation for the fertilization. Okay, now in this method, the instruments that we have, that is basically the curvaceous cap, diaphragm, or ICDU methods, can also be applied in this particular cases.
Other than that, the hormonal method can also be there. In the case of the hormonal method, the suppression of the ovum and through implant and through oral pills, the menstruation can also be stopped, so that the chances of getting, uh, I mean, the chances of getting the fertilization will also reduce in these cases. This is the second method. Now, the third method that we have, that is known as the chemical contraception. In the case of the chemical contraceptions, the creams, jellies, foaming tables, okay, that we will see over here. Okay, 1 minute. और फिर स्वीट पोटैटो नहीं किया तुमने? करूँ खाऊँ मैगी की जगह वही कर देना था, वही रहना फिर, मैंने तो फिर देखी चीज़ डाल दे इसलिए आपको नहीं अच्छा तो नहीं लगा। नॉर्मली रखा करो यार। अरे पर चीज़ खाया करो किसी तरीके से तो खाया करो मेरे को है ना चीज़। ऐसा लगता है एक्सपेरिमेंट से है ना, कभी कभी एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाते हैं तो ठीक है। जय श्री राधा जी, दूर से प्रणाम कर लेता हूँ। बताओ आपको। हेलो हाँ दीदी, जय श्री दादाजी। ऐसे हाँ यार, Yes. Okay. So now here, the chemical contraception methods are also there, and in the chemical contraception methods, the cream, jellies, foaming tables that are also like present. Okay, and these are basically for killing the sperms and at the time of the coitus. Okay, and it will prevent the fertilization. So basically जितनी भी method है हमारे पास में, mechanical method, hormonal method, chemical contraception methods, इन सब का purpose ये होता है to prevent the fertilization. Okay, these are like one of the things that is known as the health barrier method. Then other than that, we have the surgical techniques. There are two type of surgical techniques, that is that is known as vasectomy and tubectomy. Okay, in the vasectomy, the two vasa differential of the male are blocked by cutting the small piece of tying the rest, and this prevents the passage of sperms from testes to the semen. So if the semen is not entering, okay, into the urethra, then in this case the chances of getting again like the fertilization will be reduced. And in the case of the tubectomy, okay, the portion of both fallopian tubes are basically excised, or basically it is blocked, so that the passage of ovum is getting blocked over here. Okay, so in this basically scenario, in this particular scenario, whatever the things that you are having, okay, in case of vasectomy or whether in the case of tubectomy, okay, the passage is getting blocked. Okay, the passage is getting blocked, and in this passage, you'll have to do what? You'll have to like segregate the thing over here, so that ultimately the passage will not receive any external or any foreign material inside it. Okay, so these are like some of the points that you can see up over here. Now, other than that, like there are some other portions also, and in these portions, like there are other type of things, okay, that we can see up over here, which we can see, yeah, that is STDs. Now, next thing is known as the STDs. STDs are known as sexual transmitted disease. Okay, now first of all, you tell me what is the process for the STDs over here, how much STDs you know, and what you have the knowledge about STDs. Like we have two types of STDs, sir. One is bacterial and one is viral. And the bacterial are, I think, Mm-hmm. HIV/AIDS and warts, and viral are gonorrhea and syphilis. Gonorrhea and syphilis. No, no. Again, describe about the two STDs. No, sir, we don't have the definition of.
them. We just have the examples. Now for the sexually No, for the transmitted sexually disease, transmitted disease, okay, do you have basically you have this topic, isn't it? can you please check Can you once? please check once? See, because See, because the point is that again, the point is that the content which I'm the providing content it which to I'm you, providing it to okay, you, that is full okay, content. that is full The content. material Okay, which I'm the material which I'm providing, providing and the things which I'm uh, giving it to you, giving it to you. maybe Okay, it is maybe it is like a year or a like 2 year a old year or a content. 2 year old So the content. addition will So the change addition will change with the with the passage. passage of I time. mean, with the So passage I of have time. to So keep I a have track to record for keep a each and track record everything. for each and everything. So So I think yesterday I also think you don't yesterday have also you that do not have area for that a triangle area for a in triangle case of the Heron's in case formula of or the something Heron's like that. formula or something like that. Similarly, here as Similarly, well, here as well, I think 99% STD topic 99% will be STD there. topic will be there. You iPad है iPad 1 minute, sir. I'm checking. Yeah. कितने वो खेलोगे? you want super moon है सुपर मून में तो पूर्णिमा है क्या आज भाई पूर्णिमा है तू मेरा है। So the same is there in our textbook in which we have sent. हाँ हाँ, the Haha, same is there. the same is there in the textbook means Topic, topic. Like in the reproductive health, in the first paragraph, बनाना सीखना है मेरे uh, Mm-hmm. like the first paragraph is just introduction, sir. And then the second paragraph is about these sexually transmitted diseases. And then Mm-hmm. the third para is about the prevention of sexually transmitted diseases. हाँ तो basically हाँ तो sexually basically transmitted sexually disease is there transmitted ना disease is there ना in your topic in your syllabus. Yes, sir. हाँ yes चलो हाँ ठीक है yes चलो ठीक है. तो बस मेरे तो को वही हाँ पूछना बस था मेरे so को that वही I can पूछना था so continue with that the I can topic and continue then with I the will topic and then I will give you the awareness give about you the this thing awareness so about that this इसमें जो thing so questions that होते इसमें हैं जो क्वेश्चंस होते हैं we will ठीक है go for that we part will go for that क्योंकि part इसके ठीक बाद है में क्योंकि इसके बाद में वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन डायग्राम्स डायग्राम्स बडिंग इन हाइड्रा प्रोपोगेशन ऑफ रूट्स प्रोपोगेशन ऑफ रूट्स आर्टिफिशियल मेथड्स आर्टिफिशियल ये सारी मेथड चीज़ें है हम ना ये देखेंगे सारी चीजें हम जिसमें जो देखेंगे है एडवांस ना जिसमें फार्मिंग जो टेक्निक्स एडवांस हैं फार्मिंग वो टेक्निक्स भी है हम सीखेंगे वो भी हम सीखेंगे है ना. तो सबसे पहले तो तो जो सबसे पहले तो सेक्सुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिटेड होती हैं उसके डिसीजेज जो बारे में होती हैं देखते उसके हैं कि बारे में लाइक व्हाट देखते इज हैं कि लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली सो इट इज एग्जैक्टली. बेसिकली So it is basically a kind of a infectious which is infectious caused by which is different caused types of by different pathogens types of that are pathogens transmitted that are by transmitted sexual by contact sexual between the contact healthy between person the and an healthy person infected and an person. infected person. These are the two. So these are the two Now the things. sexual Now the transmitted sexual diseases, transmitted disease, so they okay, are they are also also called called venereal as disease or venereal the disease VDs or over the here. VDs over So here. some 30 So types of some 30 STDs are types of known. STDs are known. For Like example, gonorrhea, syphilis, gonorrhea, okay, syphilis, the okay, genital warts and genital AIDS. warts and AIDS. So So these these are diseases all are the the diseases STDs that that you we have have. over here. So this Okay, is basically so a this is kind of basically a STDs kind that of we can see STDs as that of you now. can see as of now. Okay, Other than that, other than that, in this topic, in this topic, okay, what in the NCRT, in the NCRT you you have, just please okay, go you just and please check go out for that and part check out for also. that part That is the one also. thing that That you is can the see. one thing that you can see. But other than But that, other than that, the labeling now part the of the labeling female part of the reproductive female part and for the reproductive male part and for the reproductive male part, you reproductive just part, please go you through just that please one go by through one. that That one where is by the one. That fallopian where is the tube, fallopian ovary, tube, ovary, cervix, cervix, okay, uteral cavity. uteral In the male cavity. Okay, in reproductive the male part, reproductive part, what is what is urethra, testes, urethra, scrotum, testes, prostate scrotum, glands. prostate Okay, glands. Okay, vas where is the vas deferens. These are the deferens. things
These are the things that we can see over there. So you just please go and check around this part one by one over there. Yes, sir. Okay, fine, yeah. Okay, fine, yeah. Um, Uh, okay, now in the case of okay, now in the case of the vegetative reproduct propagation and other type of farming techniques, okay, we will go and we will check out for these things also. So now come to this topic, which is for the vegetative propagation. And in the vegetative propagation, now stem propagation, leaf propagation, root propagation. These are the techniques that you can see over here. Okay, see, vegetative propagation, that is nothing but like what do you have? Okay, so stem propagation, stem, leaf और roots, क्या मतलब हुआ इसका? Okay, when you can see these three type of propagation, so in the three type of propagation you can see these things कि when you have जर्मिनेशन, ठीक है, मतलब रूट्स जो डेवलप हो सकती हैं वो तीनों तरीके से हो सकती हैं। लीफ से भी हो सकती हैं, स्टेम से भी हो सकती हैं, और रूट्स अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट ले लिया, ठीक है ना, आपने उस प्लांट को क्या करा, गार्डन में आप गए या आप किसी फार्म लैंड पे गए, आपने वहां से उसको निकाल दिया और आप घर पर आ गए, और आपने घर पर आके आपके उसका जो आपका पॉट है, आपने उस पॉट के अंदर क्ले डाली, सॉइल डाला, सॉइल के अंदर उसको सो कर दिया, है ना, तो भी वो वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो रूट रूट को तो डेवलप करेगी, लेकिन लीफ के थ्रू भी रूट डेवलप हो सकती है, स्टेम के थ्रू भी लीफ डेवलप हो सकती है, ठीक है। उसका जो पार्ट है, उसका जो मतलब है, दैट इज नोन एज स्टेम प्रोपोगेशन एंड लीफ प्रोपोगेशन। उसको बोला जाता है कि द सरफेस ऑफ द पोटैटो, ओके, दे आल्सो हैव बर्ड्स दैट आर कॉल्ड आईज एंड दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। मतलब पोटैटो होता है, पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, उस ब्राउन कलर की कवरिंग के ऊपर भी व्हाइट व्हाइट कलर का या येलोइश जो आईज होती है या जो बर्ड्स है वो डेवलप हो जाती है, और वो जो बर्ड्स होती हैं वो बेसिकली न्यू प्लांट डेवलप कर देती है। सिमिलरली जो लीव्स है, जैसे बायरोफैलम जो हमारे पास में लीव्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको सॉइल के कांटेक्ट में लेकर आ जाओ, तो लीफ क्या करती है, लीफ के थ्रू भी हमारे पास में जो रूट्स हैं वो रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। That is also one of the part that we can see. Other than that, we have the roots as well. Okay, the propagation of roots. In the propagation of roots, okay, the portion that we can see, that is nothing but like what do we have? कि अगर for example एक पूरा लाइक स्वीट पोटैटो है, ठीक है, या फिर अगर शुगर केन है, तो इस इससे क्या होगा कि अगर मैं उसको हाफ पोर्शन उसका कट भी कर देता हूँ, तो हाफ पोर्शन कट करने के बाद में भी जो हमारे पास में प्रोपोगेशन डेवलप होता है, वो जो प्रोपोगेशन है दैट इज बेसिकली फॉर व्हाट, स्टेम प्रोपोगेशन, या फिर वहां से अभी हमारे पास में जो न्यू रूट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दीज आर लाइक सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सी, ओके, which is the basic part for all such things over here. Okay, Yes, sir. all right, okay. Now what we can see is 1 minute. क्या क्लियर कर दिया? जैकुल को नहीं दिया आपने? कैसे दिया? ट्रांसफर कर देगा ना डायरेक्टली? 50 और 54 में लाके पहले 50 करे थे, कल 550 मतलब अच्छा कल कर दिए थे आपने उसको 50? हाँ उसको बोल दिया ना आपने? हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया ना उसको, हाँ ठीक है। और शाम को कर दिया बचा हुआ। तो मेरे को श्रेणिक वाला बताओ ना, मैं आपको करूँ। कुछ नहीं है श्रेणिक का हमारे पास में क्या है, जो भी हो, 2 रुपए की है तो भी करूँगी मैं। उनको 13,000 वो तो आ गया ना रिफंड। ये है ना श्रेणिक का 13,796 हमारे पास में क्लूब का रिफंड था, ये क्रूज है हमारा, जो पोर्शन था हमारा वो ये था।
हाँ तो क्रूज मतलब मुझे refund आ देखो ना, हाँ क्रूज का कितना था, 13,796 796 प्लस ये हमने फ्लाइट कैंसिल करवाई थी 957 प्लस 1946 माइनस 49 8, तो आपने हमको ये कर दिया इतना। तो मैंने 26 करा उसको, मैंने उसको 26 कर दिया, मतलब राउंड फिगर में जो कि वो करता रहता हाँ है। ठीक है, तो 26 मतलब 13 मेरे को आपको देना है, 13 और वो जो 38 का डिवाइड करेंगे अपन हाँ फिलिपिनो पैसे वाला, हाँ ठीक है सब। तो 38 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2 19 19 प्लस 13 32। तो ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मत दो, मैं भी यहाँ के रेंट में कंट्रीब्यूट करूँगा ना। नहीं अभी मत करो, बाद में करना जब अपन दोनों रहेंगे। घर पर नहीं यही बोल रहा है कि मेरे को तो बोल, मैंने बोला नहीं तू ऊपर का देख लेना, तो बोलता मेरे को ग्रॉसरी बता देना, तो आप भी ऐसे ही करना, 15 डेज़ का ग्रॉसरी वो कर लेगा, 15 डेज़ का आप कर लेना। अरे फिर वो ग्रॉसरी में कभी तुम लेने जा रहे हो, कभी मैं लेने जा रहा हूँ, वो सब क्या होता है ना, अलग अलग वो बात करते ये हैं मोटा अभी मोटा तुमसे। अमाउंट क्या होता है ना, वो हो जाता है। जैसे डी मार्ट गए, सारा सामान लेकर आ गए, तो राशन एक साथ आ जाता है, ऐसा रहता है। लेकिन तो अपन एक वो नहीं काम चाहते करना, हैं। आप लोग अभी चलेंगे अपन संडे को, हाँ लेकर आ जाएंगे, हाँ। वो आप और दर्पण डिवाइड कर लेना, हाँ ठीक है। ठीक है, क्योंकि मम्मी भी आएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि हाँ मम्मी हर आएंगी तो रोज सामान रैप्टो कर रहे हैं, हाँ वो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, वो मम्मी को। इससे अच्छा घर में सामान रहे वो चलेगा, वो आप लोग डिवाइड कर लेना बस। वो अच्छा नहीं लगता ना, अपने घर में आदत है सारे सामान रखने की, अभी अपन एक एक 2-2 किलो में चला लेते, पर मम्मी पापा के सामने अच्छा नहीं लगता, तो अपन लिस्ट All right. Okay. बनाएंगे। So, ऑलराइट ओके, सो all right. शिवानी, Okay. So, Shivani, like from this perspective, now this chapter is over.